Welcome everyone. Welcome to episode 4 of Stocks by Charcha. Once again with Shoab Zaman. And today we will be discussing about the investment philosophy, or rather, I would say investment anatomy of Warren Buffett and how it has changed over the years and what are the different approaches that he has had in his investing career. So once again, welcome Shoaib bhai. How are you doing? Hi. Uh, Thank you, Abdullah. Hey, I'm good. I'm good. How are you? I'm doing good as well, alhamdulillah. So we're doing this very early in the morning today. Yeah. It's much more convenient Yeah, during Ramzan. correct, correct. So let's So just begin by, a lot of people, uh, for us in the investment space, Warren Buffett, everyone knows Warren Buffett. Jisko Warren Buffett nahi pata to pata nahi wo, he's living under the rock. But for correct. the general public, there are still people, obviously, who are from the outside world, outside investment Yeah. world, and they don't know who Warren Buffett is. So if you were just to introduce people to who is Warren Buffett, so how would you go about that? So सबसे आसान इंट्रोडक्शन जो है वॉरेन बफेट का वही है कि he was the richest person on the planet for many years. ठीक है. And सब and आदमी what को does पता that है कि have to do मुकेश with what does that have मुकेश to do with अंबानी. stock market? हाँ, सो आई एम कमिंग टू इट. सो एवरीवन, हर किसी को पता है कि मुकेश अंबानी कौन है इंडिया में. करेक्ट. मुकेश अंबानी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. और उसमें सिंपल सा ये बोला जाता है कि मुकेश अंबानी जो है वो ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. और उसकी जितनी भी एसोसिएटेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री है, everything belongs to him and he's the sole owner. Yeah, sole owner नहीं, मतलब he's the main owner. ठीक है. और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड सो ऑन सो फोर्थ. वॉरेन बफेट की केस में क्या है कि अनलाइक बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम, उन लोग सबका एक्चुअली एक अंडरलाइन बिजनेस है. जैसे मुकेश अंबानी में का ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस क्या है? तेल का बिजनेस है. और उसके अलावा भी बहुत Yes, सारा बिजनेस है, जैसे जियो है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, सो ऑन सो फोर्थ. yes, ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोग नॉर्मली अगर मान लो जैसे एलॉन मस्क कौन है, अगर कोई आदमी ये सवाल पूछे तो एलॉन uh, मस्क उसका क्या बिजनेस है. तो एलॉन मस्क का तीन चार बिजनेस है. सबसे ज़्यादा लोग उसको जानते हैं टेस्ला की वजह से, जो कि एक yes, कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. लेकिन उसके पास दो और बिजनेस है, एक्चुअली अब तो तीन और बड़े बिजनेस हो गए. एक ट्विटर है, uh, उसका एक बिजनेस है. ठीक है. उसका एक बिजनेस है स्पेस एक्स प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली वो स्पेस में सब चीज़ भेजता है. फिर उसका एक सोलर प्रोजेक्ट की एक कंपनी है, सोलर, बेसिकली yes, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बना करके वो ग्रिड आप घर में ही इस्तेमाल कीजिए और बाकी का जो आप ग्रिड पे बेच दीजिए. ठीक है. yeah. And then तो he also उस has Neuralink and Boring Company. ओ हाँ, वो फिर वो उसका वो सैटेलाइट लिंकिंग Yeah, कंपनी बोल रहे, करेक्ट. तो वो भी है. Starlink. 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 So, if you look at it, he also has actual businesses. बफेट के साथ देखा जाए तो वॉरेन बफेट इकलौता आदमी है पूरी लिस्ट में जो अ, जिसने कोई बिजनेस नहीं खड़ा किया है, जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्ट करके करते हुए ही वेंट अराउंड, उसने और कंपनी खरीदी और कंपनी खरीदी और कंपनी खरीदी. तो कंपनी जो है वो दूसरा आदमी चला रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्सेप्ट ये कि ही ओन्स द कंपनी. और बर्कशायर Uh, हैथवे करके इसकी एक मेन कंपनी है, जिसमें अ, जिसके अंदर उसने सारी कंपनीज को अपने एसिमिलेट कर लिया है. तो वो एक होल्डिंग कंपनी है. और वो होल्डिंग कंपनी जो है वो कुछ बहुत स्पेसिफिक बिजनेस नहीं करती, वो सिर्फ बस पैसा बांटती है और पैसा सबसे कलेक्ट करती है अपने तमाम कंपनी से. तुम उसको ऐसे समझो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस चीज़ को समझाना हो तो वो टाटा सन्स है. तो टाटा ग्रुप जो है
पूरा इंडिया में जितनी भी कंपनीज है टाटा ग्रुप की, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय टाटा सन्स। टाटा सन्स जो है वो तुम्हारा एक ट्रस्ट है। वॉरेन बफेट के केस में सारी सब चीज़ जो है वो एक कंपनी से कंट्रोल होती है, और वो कंपनी जो है वो बर्कशायर हैथवे है। तो वॉरेन बफेट जो है उसके उसने उसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये कि ही हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट बाय इन्वेस्टिंग, नॉट बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस और ग्रोइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस। कोई एक right. पर्टिकुलर बिजनेस को बड़ा करके वो रिचेस्ट पर्सन नहीं बना है। जैसे कि बिल गेट्स का अगर एग्जांपल ले लें, बिल गेट्स ने क्या किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, Yeah. एक कंपनी, एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है, और वो उसके बेसिस पे फॉर मेनी इयर्स ही वाज लाइक द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो उस तरह से उस पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए, या अगर इसके बारे में टेस्ला के केस में देख लिया, मतलब सॉरी Elon Musk. एलॉन मस्क के केस में अगर देखा जाए, तो उसने सीरीज ऑफ बिजनेस बनाया, 3-4 बिजनेस मिला के, एंड दैट्स हाउ ही हैज बिकम सुपर रिच। लेकिन वॉरेन बफेट का केस एकदम अलग है। ही हैज बिकम रिच ओनली बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है। Right, right. Investing, right. So इन्वेस्टिंग how did his journey start? Where did he get the capital to start investing in the stock market? Because it's very easy to say कि भाई I had X million dollars or X billion dollars and then I started generating returns. But where did he start? If you can throw दैट्स some light on that. करेक्ट। सो ये ना, जितने भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग मे गेट ओवर एक्साइटेड, बट ही इज फेयरली यूनिक। क्योंकि उसकी अगर तुम हिस्ट्री देखोगे, तो उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 11 ईयर्स और सो। स्टॉक, पहला स्टॉक जो खरीदा, I think it was 16 or something. Let me see. नहीं 16 नहीं था उस, 16 से बहुत पहले। ये शायद 16 में उसने 11, पहला स्टॉक 11. खरीदा, Yes, yes. 11, yeah. 11 में पहला स्टॉक खरीदा है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि इवन बिफोर बाइंग द स्टॉक उसका बिजनेस सेंस जो है वो हमेशा बहुत अच्छा था। जैसे उसका एक्चुअली पहला बिजनेस क्या था, आई थिंक एट द एज ऑफ 9 ही स्टार्टेड आउट सेलिंग लेमनेड। तो बेसिकली गर्मी के टाइम में टेबल लगाया, उसके ऊपर लेमू पानी बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। Uh, और उसके पास जैसे जैसे पैसे जमा होने, और फिर वो पैसों को सेव करता चला गया। तो सेविंग जो है वो पहला क्राइटेरिया है जो उसने हमेशा फुलफिल किया। ठीक है, हाई सेविंग। फिर उसके बाद उसने अ, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने वो बार्बर शॉप पे गया। बार्बर शॉप पे उसने देखा कि अरे यार, यहाँ पे तो बहुत लड़के आते हैं आकर के अपना बाल कटवा रहे हैं। क्रू कट उस जमाने में था अपेरेंटली उसके टाइम में, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो उसने कहा कि तुमको पिंग पोंग वो पता है क्या, मशीन? जो टेबल टेनिस की मशीन होती है। टेबल टेनिस की मशीन नहीं होती है एक्चुअली, वो एक ऐसे करके मशीन होती है जिसमें एक बॉल होगा ऊपर में, एंड और तुम बार बार उसको हिट करोगे कि वो ऊपर चला जाए। अच्छा। हम लोग इसका ऑनलाइन वर्जन बहुत खेले हुए हैं, मतलब मतलब हम भी खेला अपने बचपन में, जिसमें जिसमें क्या होता है कि वो कैसे बोलते हैं उसको। ओके, ओके, जो पुराने विंडोज एक्सपी में आता था एक गेम। करेक्ट, वो तुम ऐसे बेसिकली देयर इज अ हाँ, स्मॉल हाँ, हाँ। You have to prevent the ball from hole falling down the hole. from, correct, so you have to हाँ, prevent the हाँ, ball हाँ। from going down the hole। या तो या मेरा गैस है कि उसी टाइप की एक कोई एक्चुअल मशीन भी रही होगी जिसमें लोग बस वही या खेलता रहा होगा। आर्केड, एक टाइप ऑफ आर्केड गेमिंग, हाँ। सॉर्ट ऑफ आर्केड, मतलब आर्केड तो बेसिकली स्पेस हो गया जिसमें बहुत तरह की मशीन्स रखी हुई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। दिस इज जस्ट वन मशीन वी आर टॉकिंग अबाउट।
Right. सो व्हाट ही फिगर आउट वाज कि भाई बार्बर शॉप में जब बच्चे जा रहे हैं कटाने के लिए तो उनके टाइम बहुत है एंड दिस इज लाइक द इन थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1920s मे बी 20s हाँ 1920s इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है एंड सॉरी 1930 30s आई गेस रहा होगा इनफैक्ट Around that time, yeah. around that time. So what he ended up doing was he bought a second-hand ping pong machine. He installed it in one of the barber shop. उसको इस चीज़ के साथ कि भाई जो भी पैसा इसमें से आएगा वो बेसिकली वेंडिंग मशीन जैसा था आप कैश डालो एंड देन हाँ, यू कैन कीप हाँ, प्लेइंग और उसका ये था कि भाई इसमें से जो भी पैसा बनेगा उसमें से आई विल गिव यू सम पार्ट एंड आई विल कीप सम पार्ट आई थिंक वो $1 फॉर एवरी $10 वाला हिसाब था या $2 फॉर एवरी टेन okay. डॉलर्स था and 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 that's where he made his first substantial set of money उसने एक बार्बर शॉप से शुरू किया he ended up putting it in some 4 or 5 या 10 different locations और फिर वो बाद में उसने वो सब चीज जो है उसी बार्बर शॉप को बेच भी दी Okay. for some $1,000 or so और Recouped his initial investment as well. recouped his investments he made some I think something like 50x or so on his initial investments ठीक है in fact when he started investing in stocks the most surprising part uh, हम एक ड्राफ्ट स्टोरी लिखा था इसी के ऊपर बफेट पे तो उसमें उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग चीज जो जिसके अराउंड आई केम अक्रॉस वाज सरप्राइजिंग पार्ट ये नहीं था कि बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली एट द एज ऑफ 11 इसलिए because there were some other things also like his father owned a stock broking company and he used to go to his father's office अब तुम Yeah. ऐसे सोचो कि कोई भी बच्चा जब वो अपने फादर के ऑफिस जाता है तो में से एक चीज होगा either he likes the business or he doesn't like whatever his father is doing if he doesn't like तो फिर वो ठीक है by force for whatever reason they are going over there वो वहाँ पे आप किसी तरह से वो बैठा रहेगा वो अपना ही कुछ करेगा एंड देन दे विल ट्राई एंड गेट आउट एज सून एज पॉसिबल बट इफ द चाइल्ड एक्चुअली एंड्स अप डेवलपिंग इंटरेस्ट इन दैट बिजनेस तो वो तो फिर सब तरह का सवाल पूछेगा डिपेंड करता है हाँ, बड़े उसको कैसे कितना एंटरटेन करते हैं एंड हाउ ही गेट्स एजुकेटेड और उसका अपना इंटरेस्ट कैसे मूव करता है ही ऑलवेज हैड द knack फॉर businesses and to understand them or to explore about them right. इसलिए इसलिए with his father being a stockbroker he had an advantage क्योंकि he got Of course. introduced to stocks long before anyone else in his among his peers will get Right. उसको तो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो उसको एडवांटेज वहां पे मिल रहा है G. so so him investing at the age of 11 was not a big deal but him investing $1,100 or something around over thousand $1,000 was a humongous deal क्योंकि That was a big deal. उस जमाने में $1,000 की सेविंग्स जो है बड़े बड़े लोगों की नहीं होती थी कितने लोगों की साल की सैलरी नहीं थी उतनी ठीक है Of course. सो That is a big deal. Yeah. that's a big deal इनफैक्ट मतलब जहाँ पे हम मतलब रिसर्च करते करते जहाँ पे ये इस चीज़ के ऊपर हम पढ़ रहे थे वहाँ पे उसने मतलब जो ऑथर था उसने बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा कि मतलब $1,000 की सेविंग्स एक टीचर भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी उतनी सैलरी भी नहीं होती है साल की Uh, and that was the surprising part and that was the part which actually shows ki how different he was from everyone else so that is one part the second part comes कि आज के डेट में हर आदमी जानता है कि he is like a billionaire he is like the top 10 क्या बोलते हैं top 10 top 3 top 4 richest person on the planet so on and so forth लेकिन उसमें दो चीजें और है जिसको हाईलाइट करना जरूरी है
पहली चीज ये कि बफेट के केस में कंपाउंडिंग हैज वर्कड लाइक मैजिक। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, ऐसे सब आदमी एट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बट सच बात ये है कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड। हमको राइट। खुद बहुत देर लगा समझते समझते, तब आफ्टर स्टार्टेड वर्किंग। इनफैक्ट अभी रिसेंटली किसी को समझाते समझाते हमको क्लिक किया कि अरे यार ये कितनी तरह से इसमें सोचने पे कितनी तरह से इसको समझ में आएगा। जैसे हम लोग जब सोचते हैं, अगर कोई आदमी एक अर्जेंट क्वेश्चन पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख रुपया है, यू आर गेइंग 10% ऑन इट, और तो 5 साल में तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे, और ज्यादा मत सोचो, फौरन जवाब दे दो, तो तुम्हारा जवाब आएगा 1.5 लाख रुपया। उसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं 1 लाख, उस पर 10%, तो 10,000 हुआ, 5 साल हुआ तो 50,000 हुआ, तो 1.5 लाख हो गया तुम्हारा। जी। ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट सोचने का तरीका हुआ, और हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सोचते हैं। दिस इज हाउ वी हाँ आर बिल्ट, ह्यूमंस इन जनरल। हाँ ठीक है। हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारा बेस हर साल चेंज हो रहा है। तो 1 लाख रुपया है, 10% बनाया तो 1,10,000 हुआ। सेकेंड ईयर में 1,10,000 पे तुम 10% बना कर, सो यू आर मेकिंग 1 लाख। तो जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में तुम 1,20,000 बनाते, इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम 1,21,000 बनाओगे। जी। राइट। एवरी ईयर इट विल बी मोर। एवरी ईयर वो 10-10% से 5 साल में अगर तुम देखोगे तो 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो हम लोग सोच जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अंडर 10% का गैप है, अराउंड 8-9% और सो। ठीक है। सो इफेक्टिवली अगर मान लो किसी को तुमने वो हिसाब बताया ना कि 1 लाख पे 10% कमा रहे हो तो 5 साल के बाद कितना बना, तो 1.5 लाख जवाब आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका एक्चुअल एक्चुअल जवाब जो है 1,60,000 समथिंग है। हाँ। सिर्फ 10,000 का फर्क है। एंड जी। विच इज वाई मेनी पीपल, तो हम लोग को लगता है यार बहुत ज्यादा नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल है, मतलब हाँ 10,000 का हाँ। फर्क है, उसको उसको 10% से बहुत कम ज्यादा का फर्क एक्सटेंड है। नहीं करते हैं। करेक्ट। तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है तो मैथ, लेकिन तुम सेम मैथ को जब तुम 10 साल पे लेके जाओ तो तुमको क्या दिखेगा कि दैट गैप इंक्रीजेस टू अराउंड सम 30% और सो। इनफैक्ट अगर तुम वो 30 साल अगर तुम कर लेते हो तो द गैप का डिफरेंस इज अराउंड 300 टाइम्स, मतलब 300%। हम्म। 300% का गैप, मतलब कि इनफैक्ट तुमको हम वो दिखाते भी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। कैन आई प्रेजेंट माई श्योर। विंडो? बिल्कुल एक बिल्कुल। यू विल हैव द ऑप्शन। तुमको इनफैक्ट दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये It's called the compound interest is called the eighth wonder of the world. हाँ, इसमें एट्रीब्यूट किया जाता है इसको आइंस्टाइन को, कि उसने ऐसा कहा था। आई हैवंट चेक्ड कि उसमें वैलिडिटी कितना है कि उसने बोला ये बात, बट ही हैज सेड दिस दिस थिंग मेनी टाइम्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ गया? And if you look at some Greek philosophers, they were also very much boggled by the idea of compound interest, especially in a social context. उनका मतलब they were not thinking in investment context. They were thinking in social context, in the context of हम्म। money lenders. That when they lend money on compound interest, then शुरू में लगता है कि oh no big deal, but suddenly it gets very exploitative. Right. Okay, we can see your screen. करेक्ट। फुल स्क्रीन दिख रहा है? जी जी। ओके। Your तो window we can ये see the PowerPoint. ओके ओके। सो अगर तुम देखोगे तो पांच
5 years पे सिंपल इंटरेस्ट ये 10 लाख पे बनाया हुआ है, 10 लाख पे 10% ओवर वॉट एवर 5 years 10 years 20 years, तो 7.5% का गैप है। ठीक है, 10 साल में इट बिकम्स लाइक 30% का डिफरेंस। तो जहाँ 20 लाख बनता वहाँ 25 लाख बन गया बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। 30 साल में द गैप इज अराउंड 3 times। करेक्ट, 336 right, परसेंट का गैप है। तो जहाँ हम लोग अगर मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग शायद 40 ही लाख सोचेंगे, वहाँ वो एक्चुअली 1 करोड़ 74 लाख बनता है। जी दिस इज जी जी। दिस इज अ ह्यूमंगस गैप। और इसी चीज को जो है सो यू कैन ऑल्सो सी इन अ ग्राफ फॉर्मेट। तो ये देख रहे हो, ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है। The red line, yeah. रेड लाइन। और क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्सिटी बोलते हैं शायद, राइट? Huh. So it going up in this way. So this is the impact, and this is where one has to understand कि मतलब बफेट के केस में बफेट हैज बीन इन्वेस्टिंग सिंस 1956। ठीक है, तो 1956 से his investment letters are present. He has been investing in the public domain। मतलब पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके इन्वेस्टिंग के बारे में 1956 से। 1956 से 2024 तुम तुम टाइमलाइन तुम देखो क्या कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है उसके लिए। Right, right. Almost 70 हम लोग, years. हाँ, और हम लोग ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ओनली फॉर व्हाट 30 years, 30 years. just increase it to 70 years, and that is how big a difference will be between what we think or perceive and what he has actually achieved। Right. That's where all the So magic happens, basically. correct। So उसके केस में ना compound interest is the true magic for him, and that compound interest has happened because of time। इनफैक्ट जब बर्कशायर हैथवे जब शुरू हुआ था ना, तो देयर वर थ्री पार्टनर्स। सो वन बफेट, चार्ली मंगर, एंड देयर वाज वन गाय कॉल्ड रिक, उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम रिक समथिंग था। Acha. Rick Gurin. क्या नाम? हाँ, रिक ग्यूरिन। Rick Gurin. Yeah. हाँ, so now that gentleman was a third partner। ये सवाल, this also I wasn't aware, this I came across in one of the interviews of मनीष पबराई, जहाँ पे मनीष पबराई के साथ, जिसमें मनीष पबराई इन्फॉर्म दिस कि उसने ये सवाल वॉरेन बफेट से पूछा था अपने लंच पे। मतलब Acha. the lunch bid Yeah, that when हाँ yeah, when yeah, when yeah. he when he won the lunch bid with Buffett। तो उसने पूछा कि रिक का क्या हुआ, एंड बफेट गेव अ वेरी सिंपल आंसर। बोला कि देखो, चार्ली एंड आई वी बोथ न्यू कि वी विल ग्रो रिच इन टाइम। ठीक है, लेकिन रिक के साथ क्या था कि रिक वांटेड टू बिकम रिच फास्टर। सो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, वी आर स्टिल इन टच, बट वो जल्दी के चक्कर में उसने क्या किया, उसने लेवरेज कर लिया। तो जब 73 Uh, का स्टॉक क्रैश, 73 का आई थिंक वो 74 76 ब्लैक मंडे कब था, यूएस का ब्लैक मंडे था 73 में या 76 में। तो तो उस टाइम में ही हैड 87, टू, 87. सॉरी 87 में। सो Yeah. 87 में his leveraged positions actually blew him। Okay. वो डिस्कशन में हमको मिला नहीं कि उसने एक्चुअली कैसे वो ब्लो अप किया था, बट अ फेयर गेस वुड बी कि व्हाटएवर, मतलब बहुत ज़्यादा समझ लो आज के डेट में अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो लोग जो है फ्यूचर ऑप्शन ज़्यादा कर रहा होगा। Huh. जिससे ब्लो अप करेगा तो इंडिया में भी वही होने वाला है।
जितने अपने फ्यूचर्स ऑप्शंस वाले लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो सब वो दे विल ऑल ब्लो अप, ठीक है। right, of course. और तो उसके केस में वही हुआ कि ही ब्लू इट, और he blew it so badly कि he had to sell his Berkshire Hathaway shares. Okay, And Buffett was the guy who bought those shares. right, right, okay. ठीक है। So so compounding and time, those two things have worked in his favor. Like anything. In fact, उसका कहीं पे चार्ट भी होगा. Maybe I'll share with you and you can put it in your show notes, Sure. or make Uh-huh. make make a small presentation कि how he has actually grown और compounding का कितना बड़ा impact रहा है उसमें. Acha, one question that I would ask हाँ. regarding Buffett is, like, he started investing at a very young age, as he already discussed, at the age Hmm. of 11, with no formal education at that Hmm. time in finance or economics. Hmm. So, in your opinion or in your knowledge, how did he made investment decisions? And I think if that is something that we can understand and replicate, not in terms of picking stocks, but in terms of key at such a young age with such little resources, no internet available, no Hmm. background in accounting or finance at that young age. How do you pick businesses? And this is something that he has said repeatedly in interviews as well, which I think connects to my question is that he just reads annual reports and tries to understand the business, tries to think about where the business will be multiple years down the line. So what do you have to say about that? How do you So pick businesses? अच्छा, अच्छा, let's put this entire thing into context. What he's saying, okay, you should read about business and that you should. This is what he's saying now, or for the last maybe 20 years, after he has been practicing it for such a long period. Hmm. Uh, initially, initially when he invested, his like I said, his advantage was that his father was there, and his father was a stockbroker. So he would have talked about something about the stock, and he would have explained something about the business, Right, and right, that's how he would, and that's how Buffett, as it, Warren would have picked up. Warren Buffett would have picked up his insight कि अच्छा ये business में क्या हो रहा है, or how he would have understood it. So, if you see, Warren Buffett is a guy who has continuously evolved. ठीक है, to right, to मतलब इस चीज़ को समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि जब वो 11 साल का था, he bought into a company. I have forgotten the name of that company. और वो फौरन जो है वो स्टॉक प्राइस पहले ना क्रैश कर गया, और उसका कुछ अपना एस्टिमेट था बेस्ड ऑन हिज कन्वर्सेशन विद हिज फादर कि ये एक्चुअली कंपनी यहाँ से इतने डॉलर तक जाएगी, ठीक है। इट हैड टू गो अप बाय सम 20%, 30% का उसमें अपसाइड था। लेकिन एज लक वुड हैव इट, व्हिच हैपेंस विद मेनी मेनी इन्वेस्टर्स, कि वो अपना पहला स्टॉक खरीदते हैं और इनफैक्ट उनका जो भी एक्सपेक्टेशन होता है नेक्स्ट 1 ईयर का, उसका ठीक ऑपोजिट होता है, एंड दैट मनी, uh, द स्टॉक फॉल्स। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। द स्टॉक फेल, इट फेल बाय सम 20, 30, 40% odd percent, and his sister was his co-investor, ठीक है, acha, बर्टी, आई थिंक बर्टी नाम है उसका। सो उसकी सिस्टर, शी मेड हिज लाइफ हेल, कि तुम्हारे वजह से एक तो इतने ही पैसे थे और वो पैसे भी कम हो गए, ठीक है, मोस्ट नेचुरल रिएक्शन। right, एंड तो इसलिए जब पैसा उसने रिकवर किया, एंड दैट रिकवरी से उस ही मेड some amount of profit, he booked that profit and he returned his money to his sister, and he also took out his money. But in his interviews he has said that he had made a mistake, he should have actually stayed invested, because that stock actually went up by some 10 times or so, insane amount of money if he would have just remained invested. लेकिन
लेकिन that's not what he did. He actually got out at that point of time. After that, he kept investing and kept reading through all the books that were there in his in the Omaha library. ठीक है, मतलब उसके शहर की जो नॉर्मल लाइब्रेरी थी वहाँ से Right, right. Yeah. whatever he could read, he ended up reading all of that. And he invested his own money. उसके बारे में बहुत ज़्यादा accounts as such available नहीं है. So we don't know how he was doing or what he was doing or how he was buying. But a fair guess can be that uh, since he's smart and since he's such a ferocious leader, so he would have, जैसे तुम देखो उसका बिजनेस सेंस, वो क्रूकट, मतलब वो पिंग पोंग बॉल जो सब जगह जो मशीन लगाता चला गया, दैट शोज कि ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमंस बिहेव, और वो उसको भी ऑब्जर्व कर रहा है. नाउ दैट गाय इफ ही स्टार्ट्स रीडिंग, तो उसको उसको बिजनेस समझ में आने लगेंगे बहुत हद तक. Huh, ठीक है, huh. उसको केमिकल बिजनेस शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि केमिकल बिजनेस इज नॉट अ वेरी इजी बिजनेस टू अंडरस्टैंड. बट एफएमसीजी बिजनेस तो बहुत मुश्किल नहीं था किसी भी जमाने में. जी. ठीक है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हैज नेवर बीन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. मतलब उसमें समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, उसके दूसरे फैक्टर्स ज्यादा मुश्किल है. प्रोडक्शन पार्ट इज मच मोर डिफिकल्ट विद कंस्ट्रक्शन. जी. ठीक है, एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, लेवरेज थोड़ा ज्यादा होता है. सो so those so there are many different ways in which he could have understood the business. Then what we do know is that he was, मतलब, pushed by his father. He ended up doing his MBA, or Okay. while his father wanted him to do it from University of Pennsylvania, but by a matter of luck or whatever, he got to realize that Columbia में Graham is teaching, and he had come across Graham's book. ठीक है, and I guess his articles as well, because Graham was very famous at that point of time. He was being Okay. interviewed by people. He had written his book in Intelligent Investor, so on and so forth. So Security analysis and all that. Yeah. सिक्योरिटी एनालिसिस, आई थिंक उसने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले लिखी थी, या शायद सिक्योरिटी एनालिस्ट पहले लिखी थी और फिर बाद में इन्वेस्टर. सिक्योरिटी एनालिस्ट की भी एक अलग हिस्ट्री है. सो मे बी समडे वी विल कवर बेंजामिन ग्राहम एंड we'll talk more Sure, about sure. what he That is has very done. interesting. Uh, And the things that he has said. He has said certain things के अभी बहुत सारे लोग जो हैं, so if they start reading how he thinks or he used to think, they will get extremely upset. ठीक है, तो that's अब a so bit so visible from his works as well. थोड़ा सा. हाँ. So what happened with Buffett was he went to Graham's वो night school, क्योंकि वो evening classes लेता था Graham. Graham himself used to manage money, तो सुबह की classes वो नहीं ले सकता था. He used to take MBA classes only during evening. और वो Okay. finance के नाम पे वो he was teaching valuations, and which is what uh, Buffett ended up learning under him. Right. So उसके बाद uh, after after graduating from there, बफेट का स्टाइल देखोगे तो ही वाज इनिशियली वेरी मच लाइक ग्राहम, जो Right. बेसिकली जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है. अगर आज के डेट में हम लोग जिसको स्क्रीनिंग करते हैं, राइट, सिंपल सा स्क्रीन है. अब गए जाके ये देख लिया कि भाई कितनी कंपनीज जो है उनका बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से क्या वैल्यू होगा कंपनी का, और कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है. ये तो आज के डेट में बहुत सिंपल हो गया, लेकिन तुम ऐसे सोचो कि अगर A very basic margin of safety approach. वेरी वेरी बेसिक. नाउ Uh, सपोजिटली अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होता, यू डिड नॉट yeah. हैव एक्सेस टू द लेवल ऑफ एनालिसिस दैट वी गेट टुडे, Yeah. then how easy or difficult do you think is it to sit and calculate this for nifty Very 500 difficult. companies? Very difficult. Impossible. Correct. And this is the kind of advantage that Graham and or Buffett had at that point of time. उस जमाने में
ये चीज़ें बहुत आसान नहीं थी. सो ही वुड सिट एंड कैलकुलेट एंड ही विल फिगर आउट कि अच्छा ठीक है यार, ये तो बहुत सस्ता है, ये तो लिक्विडेशन वैल्यू के बहुत नज़दीक चल रहा है, तो इसको खरीद लो. ठीक है. हाँ, Few years down the line it will go up, and then you can sell it, or you can book your profit and you can get out. And that was his initial years of investing, जिसको उसने बाद में बोला कि दिस वाज मोर लाइक अ सिगार बट इन्वेस्टिंग, आज के डेट में हम लोग बोलते हैं. yeah, आई थिंक व्हाट बफेट हैज सेड वाज कि दिस वाज मोर लाइक अ रोड साइड लास्ट पफ ऑफ द सिगरेट. तो किसी ने सिगरेट पूरा पिया, उसके बाद उसको बुझा दिया वहां पे, वो आखिरी पफ उसमें रह जाता है. तो ही सो बफेट का एनालॉजी थे कि तुम बस बेसिकली तुम उसको उठा करके तुमने उसको पी लिया. yeah, सो ठीक है. सो दिस इज सो उसका पहला मोड ऑफ इन्वेस्टिंग वाज दिस लाइन. फिर क्या हुआ कि फिर ही स्टार्टेड मैनेजिंग हिज पार्टनरशिप मनी. पार्टनरशिप मनी में उसने शुरू में भी सेम काम किया, एंड देन ही रियलाइज कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि these kind of opportunities got evaporated around 60s and 70s. By 70s it was actually there wasn't anything available. ठीक है. uh, uh, जो जिसमें तुम इतना सिंप्लिसिटी के साथ इफ यू, क्योंकि हर आदमी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. आइडिया को तुम पेटेंट नहीं कर सकते. uh, सो लेट्स से अगर तुम्हारे पास भी सेम अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस है, मेरे पास भी सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस है. ठीक है. अब अगर हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ करके एक खास रेशियो निकाल लेते हैं, वट एवर ABC रेशियो, uh, और वो रेशियो इज वो हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके आई कैन कैलकुलेट इट फॉर एनी कंपनी, and based on that calculation if I buy and sell, I'll always end up making profit. And this is something that I've figured out. I cannot go and patent this. yeah, ठीक है. So as long as no one else understands in the market, I have that advantage. Every time I'll buy, every time I'll sell, this is a unique information that only I know कि उसको कैसे बहुत आसानी के साथ हम वैल्यू कर सकते हैं. And that's why I will make money out of it. बट ये चीज़ ना परसिस्ट नहीं करती फाइनेंशियल सिस्टम में. कोई भी because of आइडिया जो है, market efficiency. मार्केट एफिशिएंसी बहुत सारे रीजन है. हो सकता है मेरे पास कोई एम्प्लॉय हो, वो हमको छोड़ के कहीं और जाए, तो वो तो मेरा मेथोडोलॉजी देख लिया Yeah, ना, ही विल गो एंड इम्प्लीमेंट इट, एंड देन ही विल टॉक अबाउट इट विद लाइक 5 different people. yeah, Or yeah, someone else in the market will also come up with either the same formula or something of a similar formula. जैसे ब्लैक शोल्स मॉडल जो आज के डेट में यूज करते हैं लोग. there was a gentleman who had actually figured it out 2 years before he had figured it out, and how it can be applied to value your option pricing के लिए. तो options अच्छा, pricing किसी ने 2 साल पहले, so he made money 2 years. Had he gone ahead and shared his findings, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता. uh, राइट. जैसे yeah, ब्लैक शोज को मिला, उसको भी नोबेल right, प्राइज मिल जाता. बट उसने 2 साल तक उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया. उसने बोला यार ये चीज, ये तो मेरा एडवांटेज है ना मार्केट में, व्हाई शुड आई uh, गो uh, अबाउट टॉकिंग अबाउट इट टू एनीवन. वी विल इम्प्लीमेंट right, दिस एंड दिस इज हाउ वी आर गोना मेक मनी. yeah, सो और 2 साल तक ही went सुपर सुपर प्रॉफिट इन द डेरिवेटिव्स सेगमेंट, क्योंकि ही वाज एबल टू प्राइस इट टू द बेस्ट, टू द नियरेस्ट वैल्यू. बट द मोमेंट एवरीबॉडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट, वो जो एडवांटेज था वो एडवांटेज चला गया. देन yeah, then he could not make money using that particular formula. And this is what yeah, happens all the time in the market now. correct, sim- so the same thing is also applicable with what happened with Buffett. So Buffett figured out something by studying with his mentor, and then he started implementing it, and then he realized it कि यार shit, अब तो opportunity हमको नहीं दिख रही है. So he changed. uh, From being statistical, he changed and he started doing two different things.
Okay. ठीक है. The first thing that he did was, उसको हम लोग आज बोलते हैं क्या, प्राइस आर्बिट्राज बोल दो या, Arbitrage. हाँ मतलब आर्बिट्राज का, आर्बिट्राज तो एक एंड पे वो उसने आर्बिट्राज करना शुरू कर दिया जिसको ही स्टार्टेड कॉलिंग एज वर्कआउट्स. ठीक है. उसके ज़माने में वो आर्बिट्राज जो था वो स्लाइटली डिफरेंट तरह से करता था. वो आर्बिट्राज क्या करता था, उसका आर्बिट्राज ये था कि कोई कंपनी है, किसी के साथ मर्ज होने वाली है, तो यूएस के अपने रेगुलेशंस है, यूएस के रेगुलेशन में कुछ कुछ अनाउंसमेंट करना होता है. तो आपने जिस दिन अनाउंस किया और जिस दिन कंपनी मर्ज की, हाँ. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ. तो हाँ. मर्जर पहले अनाउंस किया गया, फिर मर्जर जब अनाउंस किया गया तो उसके बाद आप जाके आरबीआई से अप्रूवल ले रहे हैं, फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल ले रहे हैं, फिर आप वो अ, और भी जितना, और जिससे जिससे कॉर्पोरेट अफेयर्स, इससे उससे जिस किसी से भी उसको परमिशन लेना था, आप सबसे परमिशन लीजिएगा एंड देन यू विल से कि हाँ ठीक है, ये हमने अनाउंस किया था कि हम लोग मर्जर कर लेंगे. बट नाउ कोर्ट से भी, यूएस में कोर्ट से भी ऑर्डर लेना होता है कि हाँ हम मर्जर कर सकते हैं, कोई लिटिगेशन नहीं है या जो भी है, ये सारा लिटिगेशन हम एक्सेप्ट कर दे रहे हैं. सो Right. तो उस केस में क्या होता है कि द प्राइस चेंजेस फॉर द स्टॉक पोस्ट मर्जर. हाँ. बट मान लो दिस, देयर इज ए पॉइंट उसमें एंड से एक ओवर वैल्यू हो रहा होता है, एक अंडर वैल्यू हो रहा होता एक है. अंडर वैल्यू होता है. सो द वे हाँ. यू डू, सो द वे यू डू आर्बिट्राज इन दिस सिचुएशन इज कि यू बाय वन एंड देन यू सेल द अदर वन. हाँ. You राइट. long the undervalued and you short the overvalued. Correct. And हाँ. that's how you do it in the right, and you have to do it with the in the right quantum. बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फिर it can always मतलब, if the movement doesn't fall in your way, so you will not make हाँ. enough profit, whereas your capital will get tied up. So there is a Right. certain amount of a calculation कि आपको उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है. द सेकेंड थिंग इज कि इफ द मूवमेंट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर वट एवर रीजन, लेट्स से द कोर्ट सेज कि नहीं, दिस मर्जर कैन नॉट टेक प्लेस. Yeah. ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड रीजन, देन व्हाट हैपेंस इज कि योर, then it doesn't fall through, and that's where the price will reverse and it will go back to wherever it's supposed to be. Yeah. So so Warren Buffett used to take all of these things into account, and which is why he never used to invest on rumors, but he would invest only once the deal was announced. But but सारे steps fulfill नहीं हुए. So maybe जो जितना भी, अब यूएस में कितना स्टेप्स है आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मे बी 4 steps 5 steps, जितना भी स्टेप्स है बिटवीन अ मर्जर, to complete the merger. So between deal and the final step is where he will figure out at what point he has to take that position. And so price arbitrage, and that's how he used to do arbitrage. Then the third thing that he did was control situation, which is he'll go around, he'll buy a company, then he'll realize कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते में चल रही है क्योंकि इसके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है. He'll go around. So, for example, I think in his, I forgot which year, but in one of the years he has actually even explained it. So there was this company called, जिससे बर्कशायर हैथवे ही एक कंपनी थी. ठीक है. एक्चुअली 3 4 कंपनी के एग्जांपल दिया है. मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हमको सब तमाम केस में जो लगा वो था एक एक कंपनी का जिसके पास, जो कि तब गूगल मैप्स का ज़माना नहीं था. करेक्ट. सो देयर वाज हाँ. दिस हाँ. कंपनी जिसके पास कुछ 100 मैप्स साल का बनाती ये, थी वो. हाँ. 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 वो मैप्स बनाती थी, उसके पास कुछ 100 साल या 200 साल की हिस्ट्री थी फॉर एवरी सिटी, अच्छा. कि वाओ. ओके. उसमें उसका उसका लेआउट कैसा है, वहाँ मैप. और वो कौन खरीदता था उस कंपनी से, वो पब्लिक नहीं खरीदती थी. ठीक है, पब्लिक को भी वो लोग बना के बेचते थे बट पब्लिक के लिए उतने काम की चीज़ नहीं थी. It was a B2B. It was a B2B business.
हाँ, सबसे ज्यादा people who used to buy it was insurance guys and fire department and your वो जो भी आदमी जो अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहा है किसी भी तरह का, those were the guys who were most interested to buy those maps and periodically उसको updated version. उस right. कंपनी में क्या था, उस कंपनी में ये था कि उसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज हैड had bought few shares, very few shares, ठीक है, and somehow they had got themselves placed as in the board of directors, ठीक है, अच्छा, और और उसके बाद वो लोग उसका प्राइस नहीं बढ़ने देते थे, ओके। क्यों नहीं जो बढ़ने मैप देते बेच, थे? क्योंकि वो लोग मैप खरीदते थे ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अच्छा, इंटरेस्ट था, बोर्ड ऑफ अच्छा, डायरेक्टर्स की अच्छा। जो जिस मतलब कंपनी, मैप का प्राइस नहीं बढ़ने देते थे। हाँ मैप का प्राइस नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि मैप का प्राइस नहीं अच्छा, बढ़ रहा था तो आपका अंडरलाइन शेयर प्राइस कहीं नहीं आता था क्योंकि रेवेन्यू तो आपका बढ़ नहीं रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। The only smart thing that these guys did was कि मतलब these owners और ये जो कंपनी मैनेजमेंट था कि उसने क्या किया, उसने दे वेंट अराउंड बाइंग शेयर्स एट द सेम टाइम, तो वो जितना भी उनके पास रिजर्व, फ्री कैश फ्लो बहुत सॉलिड था बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को कहीं पे खर्चा तो करना नहीं, बस मैप को अपडेट करते रहना है हर साल, जो कि वो हाँ, हाँ, वट एवर प्रोसेस दे हैड उससे वो कर रहे थे, ठीक है। क्लाइंटल फिक्स्ड है, तो उनको सेल्स के लिए कुछ मेहनत तो करनी नहीं है, सेल्स हो ही रहा है हाँ, और वो होता रहेगा एज हाँ, लॉन्ग एज देयर मैप्स आर डिसेंट, राइट। राइट। अब जो उसमें से उसको पैसा आने लगा, तो दे स्टार्टेड अराउंड बाइंग ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी के वैल्यू से ज्यादा था, सो बफेट ही अच्छा। फिगर्ड आउट, हाँ बफेट ओके। फिगर्ड आउट कि कि पूरी कंपनी में ना व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कंपनी में ये हो रहा है तमाशा कि द चल रहा है, मैनेज, तमाशा चल रहा है हाँ पूरा। करेक्ट तमाशा ही चल रहा है, क्योंकि क्योंकि उसका जो सीईओ चेयरमैन जो भी रहा, जो भी सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर ये लोग जो हैं, दे वे स्मार्ट गाइज, सो दे वुड क्रिएट द प्लान एंड गो टू द बोर्ड सेइंग कि हम लोग ऐसा करते हैं सर, कि हम लोग ना मैप का प्राइसेस बढ़ा देते हैं, उससे हम लोग का रेवेन्यू बढ़ जाएगा एंड वी कैन गिव आउट थोड़ा प्राइसिंग अनलॉकिंग होगी, और जो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है इट्स अ फेयरली डिसेंट सिक्योरिटी, तो वी कैन आल्सो गिव आउट मोर डिविडेंड एंड वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट। और वहाँ बोर्ड क्या बोलता था, नहीं नहीं तुम ये सब चीज़ नहीं करोगे, बाकी सब अपनी जगह, तुमको जितना जो ट्रेड करना है तुम ट्रेड करो, यू कैन मेक योर अर्निंग बट यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस, शेयर प्राइसेस, सॉरी मैप का प्राइसेस, तो प्रोडक्ट हाँ, पे तुम रेवेन्यू अपना बढ़ा ही नहीं रहे हो। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो आई थिंक कि उनके यहाँ प्राइस स्टैग्नेशन वाज देयर फॉर सम 20 इयर्स, ओह माय गुडनेस। ओके। ठीक है। 20 साल तक उनके मैप्स का प्राइस जो है वो बढ़ा ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड सिचुएशन। एंड वंस हाँ, बफेट फिगर्ड आउट कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, ही वेंट अराउंड बाइंग दो शेयर्स, सडनली वो आई थिंक 10% 15% पे जो है सो ये हो जाता है कि यू कैन मेक सम क्लेम्स एंड यू कैन से कि हमको बोर्ड पे एक सीट चाहिए, तो बीइंग द लार्जेस्ट शेयर होल्डर या बीइंग अ प्रोमिनेंट शेयर होल्डर तो यू विल गेट इनवाइटेड, हाँ। ठीक है। He became the largest shareholder, I think. ही बिकेम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, और उसके बाद ही आस्क्ड फॉर अ बोर्ड सीट, तो वो पहले बोर्ड में घुसा, फिर उसके बाद ही डिड अ क्लीन अप ऑफ द एंटायर बोर्ड, फिर जब बोर्ड क्लीन किया तो मैनेजमेंट को बुला के पूछा कि अच्छा ठीक है अभी क्या करना है, तुम लोग के पास क्या आइडिया है, ही आल्सो हैड हिज ओन आइडियाज, दे केम अप, दे सेड कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट्स रेज द प्राइस, प्राइस ही नहीं रेज किया हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी है, तो व्हाट बफेट डिड वाज ही सेड कि डाइल्यूट द एंटायर पोर्टफोलियो, गिव द मनी टू द शेयर होल्डर्स, फोकस ऑन योर कोर बिजनेस, स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, 20 साल से जो स्टैग्नेशन है एंड दैट स्टैग्नेशन वो रीएडजस्ट करो हर किसी के साथ, so your revenue goes up, and that all of he did all of these things and then he sold his shares, क्योंकि फिर प्राइस करेक्शन हो जाता है उसमें, हाँ, so these are his controlled situations where he will get into uh,
He will get into the management, or he'll get on the board of that company, and then he'll tell them कि भाई ये करो वो करो ये करो. I can see that these are things that you can easily do and unlock the value. Yeah. And that's exactly what he that's how he used to make money from his control situation. So during his entire partnership era, if you look at it, he was doing these three things. He was doing control, he was doing workouts, and he was doing those statistical bargain जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब typical क्या बोलते हैं ग्राहम स्टाइल, जिसको आज भी a lot of people are following. In fact, everyone who gets introduced to investing, I think they all start from there. Not क्योंकि everyone. A lot of people get introduced to investing the other way around through options and tradings in India. हाँ, आज के डेट में हर बहुत हर सारे शरीफ आदमी हर शरीफ आदमी वहां से आता है बेसिकली. or you can say with people with lower expectations, then they come from that हाँ, side, and yeah. people who have very high expectations, I think they come through the future options derivatives of the format. But in a rolling market, that has always been the case. ठीक है. हाँ, In fact, I think we should even do maybe one session. I'll do some research and we can actually showcase के, how in every uh, every time when there is when the markets are high, how irrational people are, and how your overall trading activity increases. मतलब वो ये हर जमाने में हुआ है. If Isaac right, Newton can lose his money into it, I think everyone else is right. much less smarter than him. हाँ, 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 बिल्कुल. So, so So these anyways, two things which you mentioned, this was what period of time? so this was typically from 1965, once he made his partnership, to the time when he actually dissolved his partnership, which was around I think 1979 or so. 65 से 1979. 70, हाँ 65 से 79 या 66 से 79, 13 साल उसने अपना पार्टनरशिप चलाया है. So Right. 13 years is how he has done that. And after that, he had a certain change when he inclined towards high quality companies or growth companies, right? So the change happened sometime in the partnership itself. Okay. We With Munger basically. Munger was the guy who pushed him day in and day out. But I think the change of heart happened when he met Philip Fisher, because he actually made one statement once where he said, "Ki I am 85% Graham and 15% Fisher." Huh. So Philip Fisher was someone who was who was a contemporary of Benjamin Buffett. Graham. Benjamin Graham. Oh, Benjamin Graham. Sure. तो ग्राहम का वो कंटेम्प्रेरी था, बट ग्राहम एंड फिशर वेर लाइक द ऑपोजिट एंड ऑफ द टू पोल्स. सो वेयर Huh. ग्राहम वाज completely qualitative, sorry, quantitative, Fisher was completely qualitative. Even Fisher has written his a book on how to invest, common sense investing करके. Yeah. Huh, ठीक huh. है. And if you read through it, you will understand that उसमें तुम कुछ भी मेट्रिसाइज नहीं कर सकते. So for an analyst, there are lots of pointers कि तुम इससे बात करो, ये चीज़ देखो, सप्लायर से बात करो, तुम उससे क्या चीज़ समझो, एम्प्लॉय से बात करो. एम्प्लॉय से बात कर रहे हो तो तुमको क्या चीज़ यू हैव टू बी माइंडफुल कि एम्प्लॉय कैन आल्सो होल्ड सम ग्रजेस. तो Huh. एम्प्लॉय से तुमको एक्चुअली किस तरह से सवाल पूछना चाहिए. So there are many minor things that you get to understand and learn from his book. उसने किताब में इतना कुछ लिखा है तो he would definitely be teaching also, मतलब not teaching, if anyone would approach him he would also be telling many different things. Right. So Buffett had actually met him, I think sometime in 60s. I am not sure, कभी I never tried to find out कि किस timeline में he had met, but he had met him, and that has had a significant impact on how Buffett
starts investing, the guy who pushes him was Charlie Munger. Because Charlie Munger, now how did Charlie Munger come across this and what has happened? I couldn't find anything, matlab, I haven't come across anything Charlie Munger which was a shows lawyer, right? He was a lawyer. Charlie Munger was a lawyer. Charlie Munger was a lawyer who became an investor, um, and he was initially so Charlie Munger was a lawyer of Warren Buffett. What? Yeah. So I Charlie did not know. Munger, No one knows this. so Charlie Munger was his was his partner. So uh, वो कंट्रोल सिचुएशन और वर्कआउट जो करता था ना बफेट, तो कंट्रोल और अच्छा, वर्कआउट्स में उस वर्कआउट्स में यू रिक्वायर अ इट्स बेटर टू हैव अ लॉयर। उसका अंडरलाइंग रीजन ये है कि लेट्स से इवन कंट्रोल में भी, क्योंकि कंट्रोल में समटाइम्स यू हैव टू फाइट विद द मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है। yeah, नो बडी गिव्स अप द पावर विदाउट अ फाइट। of course, yeah. It's the most natural thing, right? Yeah. And तो इसलिए ही रिक्वायर्ड a legal representative, and that's where Charlie Munger had come in. Okay, okay. I was not aware of this. हाँ, so Charlie Munger, this even I didn't know, मतलब I was doing some research और उसमें casually I came across this line के जिसमें चार्ली मंगर बोला कि नॉर्मली आई वुडंट अलाउ वर्कआउट्स, और वर्कआउट्स के चक्कर में इन लोग को कई बार जो है सो मतलब झाड़ भी पड़ी है एसईसी से। एसईसी बुला अच्छा, करके बोला कि तुमने ये काम क्यों किया और ऐसा हाँ, क्यों किया। जैसे इसका एक इंसिडेंट है कि some company was trying to buy out a particular smaller firm, ठीक है, which was being run by, this was a listed company, ठीक है। okay, और उसकी 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 चेयरपर्सन आई थिंक was some lady who had lost her husband, there was some story, and and she was selling it. So Buffett okay, went and met her, and I think he said that these guys are not giving you a good term of buying. okay. हाँ, Yeah, हाँ, he हाँ, gave हाँ. some suggestion. तो उसके वजह से क्या मतलब हुआ बेसिकली कि वो बेच रही थी और बफेट ने आगे कहा कि दे आर बेसिकली मतलब बेवकूफ बफेट बना रहे बफेट हैं सेड आपको. समथिंग, हाँ, बेवकूफ जरूरत नहीं बनाना, मतलब ही मेड सम स्टेटमेंट जिसकी वजह से क्या हुआ कि द डील एक्चुअली डिड नॉट गो थ्रू, द डील ओके. फेल अपार्ट हाँ, हाँ, हाँ. because of Buffett's statement. Then Buffett is actually not a bad guy. Matlab, it was not something that he did out of malicious intent. He हाँ, gave a very fair opinion, हाँ. and that opinion had an unintended consequence. ठीक है, कि the field fell through, and so what Buffett did was he went and had a conversation with that person, and then he bought those shares. Um so basically it was something like this कि वो 40 some dollars में 47 48 डॉलर्स में आई थिंक पर शेयर के हिसाब से वो खरीदने की बात हो रही थी। Because the deal fell through, the share price went to something like mid 20s या $15 टीन्स या 20s में चला गया बेसिकली। अच्छा, अच्छा. ठीक है, so basically the price fell by 50% or whatever. So what Buffett did was कि he said कि ठीक है, प्राइस उतना गिर गया है, I will not buy at this price. I will still relieve you since you want to get out of the business, and I'll buy it at the price at the earlier वो 48 47 प्राइस डॉलर पर शेयर की हाँ, बात हुई थी। आई थिंक ही पेड सम हाँ. 45 46 डॉलर्स पर शेयर। ओके, So he ओके. paid way above the market price, but perhaps a dollar or two short of the original deal. Still very ethical, still very remarkable. Correct. So he did that thing uh, purely because he wanted to matlab, keep himself to a certain standard, and he understood that they want to get out of the business for their own circumstances.
सो हाँ. ही वेंट अराउंड एंड बॉट इट. तो द कंपनी जिसका वो डील स्क्रैम्बल हो गया था ना, दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बफेट. ओके. ओके. पहले ठीक तो है, सो दे हमारी डील वो कर दी खराब और फिर खुद खुद खरीद लिया. खुद खरीद लिया. अब उसमें आई गेस कि उसमें बहुत सारी चीजें हुई होगी. उसमें ये भी हुआ होगा कि आपने मार्केट, मतलब शेयर प्राइस से आप इतना ज्यादा क्यों पे किए. आप शेयर प्राइस को खरीद लेते, आप शेयर्स ही खरीदते चले जाते उनसे, पब्लिक हाँ. पब्लिक ऑर्डर में, तो भी केस बन जाता. वट एवर, उसमें जो भी केस हुआ, तो उसमें उसमें चार्ली मंगर was लॉयर. his legal representative. That's how I figured out कि उसमें how it was working out. And that's where actually Mangar made a very interesting remark. He said कि अभी अभी it's better that we allow him to do something and I keep track of what Buffett is doing, rather than letting him do whatever he wants to do. क्योंकि अदरवाइज ही विल फॉल इनटू अ केस एंड ही मे नॉट इवन. तो जितना भी वो कंट्रोल सिचुएशन करता था, या जितना भी वो वर्कआउट्स करता था, ही हैड टू टेक एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम हिज लीगल टीम ओके. एग्जीक्यूशन के लिए. सो द आइडिया जी. हैड टू बी डिस्कस्ड विद द लीगल टीम, सो दैट द लीगल टीम विल वर्क आउट एंड इंश्योर कि वो ही डजंट फॉल इनटू द ट्रैप. राइट. एनीवेज, टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन ऑन हाउ बफेट इवॉल्व. ठीक है. यस. So, so, like we said, he was doing these three things. Then he bought uh, Berkshire Hathaway, and Berkshire Hathaway became like a controlled company. Now, हाँ. now there are a couple of things. If one reads, and this is my understanding of what I am reading, he closed down the partnership because he thought that there aren't enough opportunities. And when he was switching out, so one should actually read his 69 as well as 68 and 69 letters. क्योंकि ओके. उसमें ना वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई ही व्हाट ऑल ही इज डूइंग. जिसमें से एक पोर्शन में ही एक्सप्लेन्स कि अभी उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, साइज बहुत बड़ा हो गया है, सो ही इज नॉट एबल टू मैनेज इट, विच इज़ वाई ही वांट्स टू शट इट डाउन. ठीक है. फिर he buys Berkshire Hathaway's, he takes controlling situation and he moves into it and he tells कि भाई जिसको भी इसमें आना है वो आके इसको खरीद लो, मतलब खरीद क्या लो, पार्टनरशिप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वील ट्रांसफर इट टू यू. ठीक है. राइट. द सेकेंड ऑप्शन इज कि वी सेल आउट द शेयर्स, गिव यू कैश, तुमको जो करना तुम करो. थर्ड थिंग इज वी इंट्रोड्यूस यू टू अदर फंड मैनेजर्स. सो आई थिंक ही इंट्रोड्यूस टू हिज क्लाइंट्स दोज हु wanted some help, uh, to to his classmate, ओके. the what was his name. So that guy ended up becoming one of the biggest hedge fund managers. Okay. uh, you can actually search with वाज इट who did. सेथ क्लार्कन? No, Seth Klarman is. Seth Klarman is another hedge fund manager. No, he's different, but I don't think there is any relationship between him and Buffett. Uh, you can check as to who did Warren Buffett uh, when Buffett partnership close, fund manager but that Buffett recommended. ऐसे करके सर्च करोगे ना तुमको मिल जाएगा. चलिए, I'll look into it. ठीक है. So so uh, so anyways, तो अब तुम्हारा बर्कशायर हैथवे में आ जाता है. तो जैसे बर्कशायर हैथवे में जो ट्रांजिशन में ही मेंशंस मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल, एक 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 तुमको एग्जांपल देते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो वो मेंशन करता है वो ये कि while on average he would have preferred businesses with return of equity below
above 15%. ठीक है. हाँ. But now because he's changing the structure and he's wealthy enough, ठीक है, अब वो दाल रोटी का मसला तो है नहीं. अब एच एन आई ऑलरेडी अचीव कर चुका है एच एन आई स्टेटस, सो ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन परहैप्स बिजनेसेस विच आर डूइंग 12% ROE or slightly lower ROE but very stable business. He will do business with people whom he likes and are also profitable. So so he mentions all of these things कि ये सब चीज वो अपने बर्कशायर हैथवे में करेगा. So this Okay. itself shows that there is a transition in how he is going to move around. Now, once he starts running Berkshire Hathaway, what he does is a different story. So what he has done over the years is he has done four things. He has made it into a private equity vehicle, but unlike a private equity जहाँ पे वो कंपनी को फिर से बेचेंगे, कंपनी में और कुछ करेंगे, he is going by a model where he is just collecting the business, or this business will also remain with us, and this Uh, business will also remain with us for life. So he's doing full acquisition and he's buying those businesses. Now, besides that, he's also doing uh, public public market investing, wherein he is buying shares. But think about it in this way: he has to buy for the volume of money that he has. Correct? उसका volume is yeah. many billions, मतलब few $100 billion Yeah. का वॉल्यूम है. few $100 billion में ना, he his challenge is कि he cannot buy smaller companies. वो इंडिया में आकर के Right. कोई स्मॉल कैप कंपनी खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई स्मॉल कैप कंपनी को वो खरीदेगा तो मतलब इट विल नॉट मेक एनी change in his overall revenue structure, in his profitability, It'll be in very everything. insignificant. It's a very insignificant company. He has to buy a large company. ठीक है. The second thing is कि पब्लिक मार्केट में आके तुम कोई भी कंपनी खरीदो तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. फॉर एग्जांपल इंडिया में एक रूल बोलता है कि अगर कोई भी आदमी कंपनी का 1% से ज़्यादा ओन करता है, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करना है. तो अगर Uh, तुम क्वार्टरली शेयर होल्डर स्ट्रक्चर्स तुम देखोगे तो इनफैक्ट तुमको उसमें भी मिल जाएगा हु आर द पीपल हु ओन मोर देन 1% ऑफ द कंपनी. uh, उनका नाम आता है. करेक्ट. नाउ if Buffett comes to India, hypothetically, let's say, ठीक है, and he starts buying TCS, ठीक है, तो TCS से वो जैसी 1% खरीदेगा, his name will start flashing up. उसके लिए 1% TCS खरीदना तो कभी भी कोई बड़ी बात तो है ही नहीं. uh, The real, when he can get a board seat or he gets a board seat at 11% or so, 10%, 11% पे आकर के I think you end up becoming a claimant for a board seat, okay. या 15%. So so from the time when it becomes public knowledge to that level is a huge gap. Uh, उतना वो accumulate कर ही नहीं सकते क्योंकि now everybody knows Buffett. So if Buffett comes and buys one company, कल को जितने लोग हैं वो सब जाके खरीद लेंगे उस कंपनी को. I don't know what he is doing. I might as well just buy into it. And there are similar rules even in Europe. आई थिंक यूएस में ये रूल 5% का है. तो जहाँ हम लोग 1% पे डिक्लेयर करते हैं नाम मेजर शेयर होल्डर्स का, यूएस में 5% पे है. बट 5% अगर आपने खरीद लिया और आपका नाम पब्लिक डोमेन में आ गया तो ठीक है ना, आपको 5 से 10% पे लेके जाना है, विच इज रिलेटिवली easier than buying at 1% and going to 10%. yeah. Right. So looking into all of these constraints, the way he has started investing is very different now. Now he's looking at it in terms of what he always says कि इसका तुम प्रोजेक्ट करो कि इसका फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा, फ्यूचर कैश फ्लो से हाउ मच यू आर गोइंग टू मेक, बिकॉज
ही इज बाइंग, इफ अगर वो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीटली ही इज बाइंग दैट कंप्लीट कंपनी, तो उस केस में तो वो फिर अवेलेबल ही नहीं होगा किसी और के लिए। बेसिकली वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसा कर रहा है। Yeah. And Yeah. if he is buying uh, uh, into a public company, he has to buy into a very very large company जहाँ पे उतना बड़ा मोट अवेलेबल हो। वो हाँ टाइमिंग नहीं कर सकता है। ही डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग टाइमिंग, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो साइज का 5% भी एक कंपनी में नहीं लगा सकता है। हाँ हाँ। सो इफ ही हैज टू बाय, टाइमिंग क्या करेगा उसकी? हिज बाइंग इज द टाइमिंग फॉर अदर पीपल। करेक्ट, हिज बाइंग इज टाइमिंग फॉर द अदर पीपल, यू आर 100% करेक्ट। तो वो तो टाइम नहीं कर सकता है। सो द ओनली वे फॉर हिम इज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, हाउ मच मनी। इफ अ क्वालिटी बिजनेस is not doing so well, तो ठीक है, go ahead and buy it. If quality business is not doing well, If quality business is not doing well because of certain incident, maybe because of policy, maybe because of whatever, मतलब एक आध इंसिडेंट होता है ना, जब तुमको सिर्फ इंसिडेंट समझने की जरूरत है। इफ यू कैन फिगर आउट, जैसे अम, जैसे आई थिंक 2014 में, 2000 2014 या 16 में एप्पल के बारे में एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग कि एप्पल इज नॉट डूइंग सो वेल, उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता है। अ, तो उसका स्टॉक प्राइस जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था और गिरने भी लग गया था। हाँ, ठीक है। तब एंड से कितना बढ़ गया है। हाँ, तब से आई थिंक इट हैज गॉन अप बाय सम 3x और समथिंग। ठीक है। Since सो परसेप्ट 2015, right? आई थिंक 14-15 के आसपास रहा होगा। So it has ठीक है, it has gone up by uh, 5 times, five बाय and a half, 5 टाइम। 6 times. और Uh, नाइस, 6 टाइम्स, 600% का गेन्स है। सो तो वो एक परसेप्शन का प्रॉब्लम हो गया था कि ये कंपनी सिर्फ मोबाइल बनाती है, और मोबाइल से कितने दिन तक चलेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ाने का कोई तरीका ही नहीं है। थोड़ा ठीक है, आईपैड लेके आई, लेकिन अब नया ही तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। वही आईपैड, वही मैकबुक, वही मोबाइल फोन। तो क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है, वेयर एज द कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो सैमसंग हो या uh, व्हाटएवर एनी अदर कंपनी, ग्लोबल कंपनी तुम ले लो, वो कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं वो लोग भी। ठीक है, yeah, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बट आईफोन में क्या नया आ रहा है? आईफोन में कुछ नया नहीं आ रहा। आईफोन में वो एक अपग्रेड वर्जन आता है, बट अपग्रेड वर्जन में अ, same चीज। ठीक है, But people are आपका still कैमरा का buying. लेंस, हाँ, कैमरा का लेंस बहुत अच्छा हो गया, अग्रीड। लेकिन Uh, आप ऐसे समझो कि द ट्रांजिशन इज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, इट इज it's not. बिकमिंग इंक्रीमेंटली बेटर, बट इट इज नॉट लाइफ चेंजिंग। हाँ हाँ, very little steps, very baby steps. सो पहला पहला मोबाइल वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन। अरे यार, मोबाइल है। पहले वो लैंडलाइन होता था जहाँ पे लोग खड़ा टच होकर डायल स्क्रीन है, करता था। मतलब आईफोन के लिए टच स्क्रीन है। हाँ, मे बी तुम, सो फ्रॉम वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक मोबाइल गोइंग टू टच स्क्रीन, दैट्स अ हाँ ह्यूज ट्रांजिशन, राइट? हाँ फ्रॉम, सो ऐसा ह्यूमंगस ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। या अगर कुछ हो भी रहा है तो हाँ मे बी समथिंग इज हैपनिंग अंडर द हुड, मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू सी इट और आइडेंटिफाई इट और रिलेट टू इट। राइट। And so there was this perception, but Buffett understood it in a very different context. If you read through all his letters, the impression that I got was कि he is looking at it कि ये एक ऐसी कंपनी है which has created a super brand, right? Super हाँ brand in the sense, one, so there are super brand, बोलना तो बहुत बहुत ही अजीब सी चीज़ है, मतलब इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट।
they have created a cult following. हाँ हाँ ठीक है? Their product has got certain patents which gives them certain advantages. ठीक है? They are able to raise price and still people are using it, हाँ right? So when you put all of these into context, and what is it that the company is doing? So the company is trying to do many different things at the same time. जैसे वो AI कार ड्रिवन में घुसने की कोशिश कर रही थी, with the division which they recently shut हाँ down, I think, राइट राइट right? हाँ So they are trying to build up other sources of revenue. Whether it will take place, not take place, we don't know. Nobody knows. But at the same time, उसका जो core business है, that is still pretty solid and it is going on. और valuations उस हिसाब से it was lagging because of perception. And this is where Buffett ended up making it, like, I think, his largest लार्जेस्ट होल्डिंग position, his लार्जेस्ट होल्डिंग largest, नहीं, largest holding वो बन गया. तो अच्छा मार्केट वो बन इम्पैक्ट भी गया वो सोचो ना, बन गया वो बन हाँ हाँ गया. हाँ वो लार्जेस्ट बन होल्डिंग नहीं गया था, बट ही टुक अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन. From an investment point also, in his books, it was a very significant position. I think it was initially 9% or 10% of his portfolio. I Now it think has so. become almost 50%. हाँ, तो सो वो 50% का जो तुमको दिख रहा है ना, वो मार्केट इम्पैक्ट उसमें काफी लंबा है. हाँ ठीक है? सो he buys it. तो इसलिए फॉर अ क्वालिटी कंपनी which is not doing well because of either perception or whatever, या ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. इट्स अ प्रॉब्लम जो परसीव्ड प्रॉब्लम है, बेसिकली. हाँ मतलब तो बेसिकली द वैसे ही वैल्यूएशंस वेयर लैगिंग बिकॉज लोगों का परसेप्शन हो गया था कि ग्रोथ अब कहाँ से आएगी बट ही सॉ कि ग्रोथ तो अभी बहुत आएगी बिकॉज you know for whatever reason like for example the cult following and the pricing power and those kind of things. करेक्ट. Now, does he go always right? The answer is no. He has gone horribly wrong with these kind of with these kind of. So he had once bought a position in IBM, I think, which is one of his tech disasters. ठीक है? Okay. जहाँ पे उसने IBM में खरीदा, उसके बाद in the next 5 years or 10 years, वो IBM was on a continuous losing streak. So the market gained and IBM did not grow, क्योंकि उनका जो सर्वर बिजनेस था, उनका B2B बहुत सारा बिजनेस जो है, it got shut down at that point of time. मतलब it did not make enough revenues. And Okay. and so when he is building up his position, he builds a position to a certain extent, whatever, 8%, 10%. He has some way of numbering कि उसको कितना करना है, and then he lets it uh, ride up. So only हाँ one of two things will happen. Once you buy, let's say, 10% of your portfolio, that 10% will grow and it will become, मतलब वो probably 100% से ऊपर चला जाएगा, या 200% से ऊपर चला जाएगा, या 10-20% CAGR से ऊपर चला जाएगा. Correct. So at one end you are going to make money. What's the other alternative that can take place? That that the position actually starts does not perform at all. हाँ ठीक है? In And the worst possible case is that you will lose your capital. हाँ Now, public market में when you are buying that kind of a company, the chances of you losing out your capital is not. मतलब, you will get enough opportunities to get out as well. If you are yes in a if you are in a yes liquid stock, तो liquidity खाली समझने की जरूरत है, right? हाँ लेकिन प्राइवेट कंपनी में व्हेन ही इज बाइंग, व्हाट कैन हैपन इज कि ही में बाय, एंड वो बाद में कुछ निकल के आया, वो कंपनी ही पूरी तरह बंद हो जाए, तो उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. सो हिज चांसेस ऑफ लूजिंग द एब्सोल्यूट कैपिटल
is very high in his private investments as against his public investments. Correct. Correct. वेयर एस कैश फ्लो जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में उसके पास डायरेक्टली आएगा. मान लो अगर फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कंपनी को ऐसा यूज करने की जरूरत तो है नहीं, उसको भेज देना अपने पेरेंट कंपनी में विच गोज इनटू बर्कशायर हैथवे, Right. एंड देन वॉरेन बफेट टेक्स अ कॉल. इन in a publicly listed company that is not what is going to happen. उसमें जो कंपनी को डिसाइड करना है वो कंपनी इतना डिसाइड करेगी, और वो फ्री कैश फ्लो का जो भी करे वो डिविडेंड देगी, तो समथिंग विल गो टू फॉरेन प्रॉफिट. इफ दे डोंट गिव डिविडेंड एंड दे गो अराउंड डूइंग सम स्टूपिड एक्विजिशन और समथिंग एल्स, तो फिर ठीक है, दे आर द वंस हु विल, मतलब शेयर होल्डर्स कांट डू मच विद इट. Uh, So 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 the way he invests now is very different because of this, because of his जितना बड़ा वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, एंड प्लस बिकॉज ऑफ व्हाट ही कैन डू एज अ एज अ स्ट्रक्चर. uh, it gives him a lot of float. It gives him a lot of free cash to play around with. हाँ, इट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ डिफरेंट एडवांटेजेस, a lot of different advantages. मतलब तुम ऐसे सोचो, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी वाला जा करके कभी भी किसी प्राइवेट कंपनी को खरीद सकता है? द आंसर इज नो, रेगुलेशंस डू नॉट अलाउ इट. ठीक है, विच हैज बीन डन इन द राइट फॉर द राइट रीजंस, बट and this is like a global policy. Globally, I don't think any mutual fund company can go around and buy any private company. They always buy listed companies. Yes. Now now he has an advantage in his structure. ठीक है. Now कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज, ठीक है, इंडिया में होल्डिंग कंपनीज बहुत सारी हैं. ठीक है, लेकिन नॉर्मली चाहे वो इंडिया हो या ग्लोबल हो, होल्डिंग कंपनीज आर यूजली केप्ट बाय द ओनर्स देमसेल्व्स, एंड दे Uh, यूज इट एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर देयर ओन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज. जैसे टाटा सन्स को ले लो. टाटा सन्स ऑल्सो इज अ ट्रस्ट, बट उसका काम क्या है? वो होल्डिंग ही कंपनी की तरह तो फंक्शन कर रहा है. But as a holding company, what does it do? It goes around and invests only in Tata Group companies. It is not open to the entire world. ऐसा तो नहीं है कि वो जाके कुछ भी खरीद लेगा कहीं पे भी. uh, तो सो उसके पास होल्डिंग, बट बफेट के साथ वैसा कुछ नहीं, मतलब ही इज नॉट टाइड डाउन टू एनीथिंग. ही विल डू वट एवर ही फील्स लाइक, वट एवर इज रेलेवेंट फॉर हिम. uh, ठीक है, एंड देन ही विल जनरेट मनी आउट ऑफ इट. तो उसका उसका इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस हैज इवॉल्व फॉर दैट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही डज क्वालिटी इन्वेस्टिंग, बिकॉज इट द क्वालिटी इन्वेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है आज के डेट में? व्हाट डू यू buying अंडरस्टैंड बाय companies, क्वालिटी? buying durable companies with, by durable, I mean companies which will maintain their pricing power. They can, I think pricing power is the main thing. And the other thing is कि उनके जो product or service है, that will not become obsolete. That is, in fact, the opposite will happen. The products and services which they're offering will be experiencing some level of growth every year for the foreseeable future, or at least for the next, let's say, 5, 10, 15 years. And करेक्ट. while the demand of their product and services are increasing, they will be able to maintain their pricing power as well, and their market सो share as well. बेसिकली सो Yeah. बेसिकली सब्स्टिट्यूट का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, G. राइट? एंड दैट दिस वर्क्स इन हिज सिचुएशन, क्योंकि उसको प्राइसिंग नहीं भी मिल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ही कैन जस्ट बाय इट एट अ फेयर वैल्यू एंड सिट ऑन इट, क्योंकि he just needs, the only thing he needs to make sure
is that he does not overpay for anything. Yeah, correct. ठीक है, as long as he can ensure that part. ठीक है, अगर वो बहुत महंगा नहीं खरीद रहा है कभी भी, तो ही कैन, उसके बाद उसको बैठे रहना उसके ऊपर, फ्री कैश फ्लो तो आता रहेगा, स्पेशली इफ इट इज अ फुल एक्विजिशन। जैसे हाँ, आई थिंक अगर उसकी राइटिंग कोई भी आदमी पढ़ेगा ना, तो दे विल रियलाइज सीयर्स कैंडी एक कंपनी है, राइट, विच ही ओन्स, विच अच्छा। इज बेसिकली इनटू, तुम समझ लो अपना, अपने यहाँ का कैडबरी जैसा, चॉकलेट ओके। बनाने के लिए बहुत मशहूर। ना सीएस कैंडी जो है वो उसका, उसको उसने कंप्लीट एक्विजिशन है, पूरी तरह उसने खरीद लिया। और अगर तुम उसमें उसको देखोगे, ही हैज मेड मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट के आई ओवर पेड फॉर इट, बट ओवर व्हाटएवर 30 years 40 years, ठीक है, ओवर अ 30-40 year period आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज उसका फ्री कैश फ्लो हैज इंश्योर्ड कि he has made tremendous amount of money. राइट। So this is why he is buying quality companies. And the very simple Even if reason is you even if you miss on the margin of safety side, even if you accidentally pay more, if the company is high quality, over long term you will end up making money some way or the other, either through correct. तो dividends, अगर either through free cash flow, or through capital appreciation. correct, so and that is what he has been doing, and that's where his and that's how his style has evolved. मतलब that is Yeah, the biggest reason for his evolution. right, right. कुछ चीजें ना बड़ी मिसलीडिंग है, मतलब लोग कॉन्टेक्स्ट कई बार समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल तुम देखोगे, पिछले आई थिंक पिछले 5 साल 6 साल से न्यूज़ मीडिया में हम देखते हैं कि पीपल आर जस्ट ऑब्सेस्ड कि उसका कैश लेवल कहाँ से कहाँ चला गया है। द जो पार्ट कोई आदमी सोचता, मतलब शायद नहीं सोचते, बहुत सारे लोग जो ऐसे लिख देते हैं कि उसकी कंपनी के कैश लेवल हमेशा नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी में उसकी सारी कंपनीज को अगर तुम डिवाइड करोगे, आई थिंक ही हिमसेल्फ हैज डिवाइडेड इनटू 4 big businesses. द फर्स्ट चंक ऑफ द बिजनेस इज इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर में बहुत सारी कंपनीज है, Hmm. जैसे री इंश्योरेंस की कंपनी है, डायरेक्ट इंश्योरेंस की कंपनी है, होम इंश्योरेंस की कंपनी है, ये तुम्हारा व्हीकल इंश्योरेंस की कंपनी है। तो इंश्योरेंस की उसके पास कुछ 20-25 कंपनी है, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस सब मिला करके। देन हिज सेकंड लार्ज बिजनेस इज बेसिकली योर वो रेलवे बिजनेस विच ही बॉट फ्यू इयर्स बैक। Oh, ठीक है, इट्स अ ह्यूमंगस बिजनेस, क्योंकि उसने आई थिंक ही ओन्स द बिगेस्ट रेलवे लाइन इन यूएस। अच्छा। हाँ, वो रेलवे बिजनेस उसका, वो रेलवे बिजनेस ना, इट्स अ मैमथ बिजनेस। देन हिज थर्ड बिजनेस इज व्हाट्स हिज थर्ड बिजनेस, ऑल अदर कंपनीज, जैसे जिसमें बेसिकली तुम्हारा सीयर्स कैंडी और ये सब जितनी भी इसके पास ये है फुल्ली होल्ली ओन्ड कंपनीज वो है। और फोर्थ सेगमेंट हो जाएगा तुम्हारा पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, एप्पल हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। ठीक है, नाउ अब अगर इसका ये 4 बिजनेस में से देखा जाए, तो हिज इंश्योरेंस बिजनेस रिक्वायर्स दैट ही ऑलवेज होल्ड्स अ लॉट ऑफ कैश। कोई आदमी कभी ये, मतलब एटलीस्ट आई हैवंट सीन सच काइंड ऑफ एनालिसिस जहाँ पे लोग बोले कि उसके पास कितना कितना कैश अवेलेबल है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर व्हाट ही मस्ट बी कीपिंग फॉर हिज इंश्योरेंस बिजनेस। हाँ, ऐसे कोई नहीं सोचता है।
ऐसे कोई नहीं सोचता है इंश्योरेंस बिजनेस में ही नीड्स अ लॉट ऑफ कैश एंड ही नीड्स अ लॉट ऑफ कैश फॉर हिज रेलवे बिजनेस. अच्छा, why does he need cash for his railway business? सो रेलवे बिजनेस में ना ही विल रिक्वायर कैश, ही नीड्स टू कीप कैश क्योंकि रेलवे बिजनेस में रेलवे बिजनेस बीट इन इंडिया और बीट इन यूएस, ठीक है, people are not spending enough into infrastructure and people are not spending enough into the safety part. Okay. So my reading is कि while the service has is good, um, and there are lots of things, actually the cost of operating a railway business has become much higher, and your profitability margin is probably वो it's a paper thin margin, 3 4 5 6% वाला बिजनेस है, उससे ज़्यादा का वो बिजनेस नहीं है. In the best part of the cycle, it's a business which may give someone, returns. The return on equity can be somewhere around in 10 12%. But in general, जब उसका जो लो साइकिल आएगा ना तो वो 1% 2% का भी वो रिटर्न्स देता है. This is something that somehow Buffett has either missed or he has calculated it, but he's thinking from an absolute number. ठीक है, या जो भी आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग, बट जो भी है, either he has missed on that part or he has already thought about it, which which will actually require him a lot of money. In So fact, he I could think exit if he wants to, right? now he cannot, वो उसका wholly control situation है ना उसके लिए. Okay, okay. उसने वो जो रेलवे कंपनी जो खरीदी थी तो he had completely bought it. So that used to be a listed company, and he bought it in a way where I think, after a very long time, it was a company जहाँ पे उसने all cash deal नहीं किया, but he even gave some shares to the shareholders. So share That swapping was के some पीछे. other company. That was some other company. नहीं नहीं, रेलवे के लिए भी किया है. अच्छा, रेलवे के लिए भी किया, एक और कंपनी में किया ना, which turned out to be a really bad investment. वो तो वो मेंशन करता रहता है अपने इसमें, एक जूते की कंपनी के बारे में अक्सर वो हाँ एक हाँ हाँ एग्जांपल हाँ हाँ. देता है कि he he did some share swapping over there and it was like a shit of an investment, क्योंकि वो जूती की कंपनी चले ही नहीं. बट रेलवे के केस में देयर वाज अनदर, ये रेलवे की कंपनी was humongous by itself. आई थिंक उसके कंपनी में भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सम 50% और 60% ऑफ द एम्प्लॉयज एक्चुअली कम फ्रॉम दैट रेलवे बिजनेस, Come from railway? फ्रॉम द रेलवे बिजनेस. Okay. So among all his companies, all his employees, 50% of the Most of employees represents are from the railways. from the railway business, and for the all other businesses is basically the rest of the employees. Because railway is a kind of business which requires a lot of people to It requires a lot operate. of people. And if you have a lot of people, you can't be running a very high margin business. That's a very clear thing. So why would he invest in railway? What's the idea I behind railway? I don't know why he did it. If I have to make a guess, I would say it gives him. So when he bought it, he made a very simple. क्या बोलते हैं उसको? He made a very simple statement. He said कि जिस तरह से पेट्रोल prices are going up, people will have to move a lot of luggage through railways. It will be an efficient way of moving around, Okay. and that's the reason why he bought it. तो उस टाइम में ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई आदमी सोचा नहीं था उतना. हाँ हाँ. या फिर एयर ट्रांसपोर्ट इतना इकोनॉमिकल हो जाएगा और इतना मास यूज में आ करेक्ट, जाएगा. तो वो मास यूज में चला जाएगा, मतलब ही वाज थिंकिंग ऑन द लाइंस कि वो फ्यूचर में कैसे होगा. एंड द
उसने बहुत ज़्यादा elaborate नहीं किया है, तो nobody knows exactly how uh, क्या बोलते हैं उसको कि what he was thinking. थोड़ा बहुत इधर उधर बोला, उसके बोलने से you can make some guesses. So my guess is कि हाँ he was expecting कि what's going to happen is कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट यूएस में बहुत बड़ा है, एंड हो सकता है कि हाँ कार मार्केट से पीपल विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि इफ फ्यूल प्राइसेस गो अप, योर प्राइसिंग फॉर बोथ योर एयर टिकट्स विल गो अप as well as your petrol cost will go up. So basically, your car becomes expensive. So what do you do for your हाँ intercity uh, travel? Then railway becomes an alternative. Matlab, that's a realistic हाँ thought process if someone doesn't know the business. But if you start looking into the business, so I don't know. I think it's a cyclical business, and it's a cyclical business like a shipbuilding business. Okay, shipbuilding business में right शिप बिजनेस बिल्डिंग में तुम्हारा द पॉइंट जहाँ पे वो हाईएस्ट आरओई दिखा रहा है ना तुम्हारे बिजनेस का, और जहाँ पे वो तुमको दिख रहा है कि ऑल योर मेट्रिक्स इज डूइंग फैंटास्टिक, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी शायद डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही होगी, सो ऑल ऑफ दीज जी थिंग्स अलाइन एट एट इट्स हाई पॉइंट, और तुम अगर वहां पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो द चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इज नॉट वेरी हाई. it's a safe bet but मतलब ये है कि it's something that keep on giving you something every year for a सो long ऐसा time ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ, तो मतलब फ्रॉम अ रेलवेज पर्सपेक्टिव सोचोगे तो इट इज पॉसिबल कि यू वन वन विल एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है, यू विल कीप गेटिंग मनी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, बट आई डोंट थिंक कि वो उसके मतलब that's one of those positions that maybe 20-30 years down the line people will come and say अरे यार ये this was one of those dead positions that where Buffett had invested. uh, वैसे वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, ऐसा नहीं है कि बफेट एवरीथिंग दैट ही बाइज बिकम्स गोल्ड, ठीक है, ही हिज हिट रन रेशियो आई थिंक इज आल्सो क्लोज टू अराउंड 50% or 60% at max. really इतना इतना लगता है आपको और उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है, 60% से ज़्यादा तो नहीं होगा, दैट आई एम मोर देन विलिंग टू बेट ऑन इट. so really the key ingredient of his success is that he has been doing it for a really long time One, he has been doing it for a very long time. Two, he has continuously been evolving in the right way, or evolving as per market requirement or as per the amount of money that he was managing. Okay. So uh, it's a combination of things that has played in his favor. The third thing is कि one has to also understand कि नॉलेज के साथ ना भी कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. जैसे because he has read about many different industries right at the very start. Now, when he's looking at each industry, he's seeing कि how that industry is evolving. So, जो future projection जब वो सोचता है, तो वो future projection भी उसी तरह से सोच रहा है. right So those are his true advantages. That advantage will disappear completely अगर लोग उतनी सारी चीज नहीं सोचेगा. हम तुमको एक एग्जांपल ऐसे देते हैं, इन द जनरल इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, एवरीथिंग दैट पीपल आर राइटिंग और थिंकिंग अबाउट टुडे, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, एवरीथिंग इज बीइंग डन विद द आइडिया दैट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ऑफ अ कंट्री. uh, तुम सेम लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर दो एंड थिंक अबाउट इट कि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज करने लग जाए तो डज इट होल्ड ट्रू.
for many businesses A that lot will of things just will not. disappear. Correct, Ah, correct. for many businesses it will just disappear. हाँ, वो ना एस्टिमेशन ही उसका पूरा हेवायर हो जाएगा। सो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो थिंकिंग थ्रू हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। बट थिंकिंग थ्रू में आपको ऐसा नहीं है कि आप I don't know if it's a joke or not, but there was something very interesting that I came across जिसमें ये था कि कोई आदमी है जो कोई गया और मोसार्ट के पास जाके बोला कि आई एम व्हाटएवर 16 इयर्स ओल्ड या 17 इयर्स ओल्ड, आप हमको बताओ कि व्हाट शुड आई डू टू कम आउट विथ सुपर्ब म्यूजिक, राइट? हैव यू लिसन टू मोजार्ट? हाँ, I'm हाँ, listening. What's that? हाँ, ठीक है। सो उसमें उसके पास जाकर के उससे पूछा कि आई एम 19 इयर्स ओल्ड, आप हमको बताओ कि क्या करना चाहिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड डू। सो मोजार्ट replied to him saying something on the lines के ऐसा है कि तुम कुछ मत करो बिकॉज यू विल बी अ फेलियर। एंड दैट गाय बिकेम ऑफेंडेड एंड ही सेड कि अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, व्हेन यू वर 15 ईयर ओल्ड तब तो आप तो तभी से कंपोजिंग कर रहे हो। सो मोजार्ट सेड क्या, करेक्ट, आई वाज डूइंग इट बट इट आई डिड नॉट गो अराउंड आस्किंग अदर पीपल फॉर देयर ओपिनियन। हाँ, So if someone is just trying to build their opinion based on what everybody else is saying, so the chances of you of doing something very original is not very high. हाँ, That is also true with investments. One has to think for themselves, or one will have to rely. जैसे चार्ली मंगर was investing himself, ठीक है? But more than that, he figured out कि Warren Buffett is a great is a genius. So I might as well give buy Berkshire Hathaway and just stay with it. उसके अलावा जो हम हाँ, थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट गोज ऑन एज इट इज, बट माय चंक ऑफ माय वेल्थ विल बी विथ वॉरेन विथ Berkshire Hathaway and what Buffett is managing, so I don't have to bother about it. That's the other approach. That's the other way of looking at it. right, right. So, Shoaib bhai, I think we have covered a lot over the last 100 minutes And or so that we have been doing this. uh, Before we wrap up, any you would say changes that Warren Buffett has gone through recently, or how do you see? Another question that we can answer is that recently Charlie Munger passed away at the age of 99 after having hmm. led a significant life in many terms. So, how do you see Berkshire Hathaway after Warren Buffett? What's going to happen to Berkshire Hathaway after Warren Buffett? That's a very challenging question, और A उसमें lot of people चैलेंज ask this. आई थिंक एवरीबॉडी आस्क इस क्वेश्चन में कोई गलत भी नहीं है, ठीक है? व्हाई आई से चैलेंजिंग इसके, so Warren Buffett has never, uh, at least in the last 20 years, that I have never come across where he has said कि I have chosen this guy is my successor. ऐसा करके उसने कभी भी अनाउंस नहीं किया है। Hmm. The nearest I could find was कि he said कि उसने अपने प्लान्स थोड़े जो रिवील किए उसमें उसने बोला कि he has shortlisted on four fund managers, yeah, four managers who will be running his different businesses, ठीक है? And Okay. those guys, and each one will have an independent charge of how they are running. But there, so my guess is कि what he has decided or what he intends to do is कि while he'll announce one CEO once Warren Buffett leaves,
and that CEO will oversee some sort of a कोऑर्डिनेशन और अ कॉम्बिनेशन कि भाई कौन सा फंड मैनेजर क्या चीज़ दिखेगा नहीं दिखेगा। अजीत जैन का नाम इसमें अक्सर आता रहता है, बट आई थिंक Okay. मोस्ट ऑफ इट इज स्पेकुलेशन। आई थिंक अजीत जैन माइट एंड अप बीइंग वन ऑफ द फोर गाइस, ही मे और मे नॉट बी द सीईओ, वी डोंट नो। मतलब दैट्स समथिंग दैट, क्योंकि बफेट ने कभी बोला नहीं है, तो टू प्रिज्यूम और अज्यूम इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड। ठीक Okay. है। Okay. This is. I just looked it up. Greg Abel. ग्रेग एबल का Greg. भी आजकल नाम आ रहा है ना, So ठीक है। Warren Buffett named Greg Abel as his successor at Berkshire Hathaway in 2022. In 2021, अच्छा, अनाउंस किया है क्या? तो फिर आई हैव कंप्लीटली Buffett मिस्ड इट। Buffett confirmed that Abel will eventually take over for him after. Uh, huh. So this is official. 21 में अनाउंस किया है। 21. ग्रेग एबल का ये चेक करो तो उसका एज क्या है। His age is 61. ठीक है। उसमें सो 62 दिस इज now, almost 61, 62. He was born in 1962. तो अभी कितना हो गया? 62 हो गया. 62 हो गया। और वो कौन सा डिवीजन देख रहा है? He's the vice chair of non-insurance business operations at Berkshire Hathaway, oversees all of Berkshire's railroad and auto utilities, manufacturing and retail subsidiaries. बेसिकली अदर As देन इंश्योरेंस ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। he has been at Berkshire since year 2000. So that is basically the guy who will be. लेकिन उनके पास ना एक प्रोविजन है, बर्कशायर हैथवे में एक प्रोविजन है कि उसका जो बेटा है ना, आई थिंक उसका नाम क्या है, हॉवर्ड बफेट। हाँ, I'm not sure about his उसके son. बेटे का नाम, उसके, सो हिज सन हैज दैट प्रोविजन वेयर इन ही कैन स्टेप इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा. इसमें है कि नहीं आई डोंट नो। ये मतलब हम लोगों ने अगर कुछ चेंज किया है तो आई कांट से, बट वो एक प्रोविजन आई हैव कम अक्रॉस जिसमें है कि his son at any point of time, if he thinks कि uh, there is some sort of a crisis going around, तो he can step in। अच्छा, तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जी. So we all talk about, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि भाई तुम्हारा विल रेडी होना चाहिए। यू शुड प्लान कि हाउ योर स्टेट विल गो ऑन टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर हेयर अपेरेंट। ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। और इसमें अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि दे विल नेम समवन हु इज एट देयर ओन एज or maybe a few years younger or few years later। So the first uh, the first instance where I have come across in Warren Buffett's case, he had said that if anything happens to him, his wife will take over and she will see him, Susan, first wife. But Okay. Susan passed away before him. Okay. So then he changed it again, and that's when he said, "Ki, My एंड son. आफ्टर दैट, नहीं नहीं नहीं, आफ्टर दैट उसने अपने बेटा को नहीं कभी भी डायरेक्टली बनाया। ही सेड कि अच्छा ठीक है, व्हाट वी विल डू इज के वी विल फिगर आउट। मतलब आफ्टर दैट ही गिव अवे ऑल हिज वेल्थ टू द चैरिटी एंड देन gave some to his children, and the children also have to run and manage some charity। ठीक है। तो he has done all of those things, and then on top of it he has also said कि अच्छा, that is when he started saying कि ठीक है,
we'll have four managers. Each manager will look into different businesses, and then they will work as a cohort. And among them, we I have decided on successors. Okay, this guy is the first successor. This one is the second successor. What if this guy dies? What if Greg dies before Buffett? Oh, A very real possibility. What if Greg dies right after Buffett, maybe within a year or two? So yeah. so so which is why he used to say कि एक नाम नहीं है, multiple names है, and I'm not revealing anything. But background में there is that option कि if things are going haywire, then my family can step in. Otherwise, his family need not get into it. His family can remain at Which is the actually a ownership. very powerful statement to make. Yeah, It's actually a very powerful statement to make. कि the family can step in. Largest shareholder है यार. तुम भी अपनी कंपनी के लाकर लार्जेस्ट शेयर होल्डर और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो तुम्हारी फैमिली कभी भी स्टेप इन कर सकती है. क्वेश्चन ये उठता है, हाउ हैज ही ट्रेन्ड हिज फैमिली मेंबर्स? He Huh. takes decision today, right? He invests. Has he done some training, any training, some level of training for his family members where he has taught them on how to evaluate decisions? People can be making an honest Uh, mistake, or people can be making a deliberate mistake. When they are doing a deliberate mistake, it's actually not a mistake. They are doing it deliberately. They are trying to tarnish, or you can say, uh, destroy the company, or they are getting greedy by their own, क्या बोलते हैं उसको, by their yeah, for their personal accomplishment. ठीक है? And so that's the only question. Okay, has he has he taught enough in his family members that they can step up and say कि नहीं, ये जो huh. काम कर रहा I हूँ ये don't think गलत that है. is the case. हाँ. But his son, if you look at his son, he has lived a very different life, very different Yes, life. his son has lived a very different life, and to ensure discipline for his son said कि I think his son wanted to start a farming business. So Buffett said कि ठीक है, I'll give you money, but you ensure that you give me 10% का return on equity. If you can't reach 10% on return on equity, then I'm not giving you the money. This was this I have read in one of the interviews where his son had said कि ऐसा ऐसा, this is what uh, my father said to me, and that's when I realized कि 10% एग्रीकल्चर बिजनेस से बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है. Uh, but he So has done farming. He has done a lot of. His son has done a lot of farming. he has done a lot of farming. He has done a lot of things. His son has. There is a very interesting story that his son came to India, and then he visited one of the wildlife sanctuaries, and then he one of the guards over there said कि उसने पूछा गार्ड से कि तुमको क्या प्रॉब्लम फेस करते हो. आपकी तो आवाज कट गार्ड रही ने है बोला, शोएब भाई. हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो. आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही जी, है? आपकी आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. हाँ, ओके. अब ठीक है. अब ठीक है. हाँ. सो तो उसका बेटा जब इंडिया आया था, आई डोंट रिकॉल व्हेन, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, तो हिज सन विजिटेड वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वो जो नॉर्मल होता है, हर आदमी पूछता है ना कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जो भी हुआ, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ही हैड गॉन, ही आस्क्ड the guards over there कि what challenges are you facing, and they said कि communication is a humongous challenge.
क्योंकि पोचर्स आते हैं तो कई बार वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद आर, तो वॉकी टॉकी नहीं है हम लोग के पास, इन शॉर्ट. Okay. Huh. So he went back to US and then he tried sending them some walkie talkie, या whatever, some communication के लिए जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था. Apparently the customs guy in India, they were demanding some वो uh, Bribe. bribe. They were asking for bribe. And his son, he said कि अभी जो भी हो जाए bribe तो नहीं देंगे, because it's something that I will not do and we don't do it. So his son had to actually go around and ask so many different people कि अच्छा ठीक है, I am son of Warren Buffett, help me, I would want to send this these these walkie talkie to whatever this that particular sanctuary. और उसमें उसमें हम सुना कि बहुत सारा, there are lots of मतलब some really influential people had to actually get into it कि certain things can't be stopped, you can't stop this guy. Okay. And besides, he's not doing anything wrong. He's actually doing something which benefits all of us for our betterment. So why are you asking for a Right. bribe over here? Just let it go. Right. 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 तो सब तरह की कहानी होती है. Okay, Shoaib bhai. So I think we can wrap up at this moment. We just hit 8 a.m. in the morning, and we started right Oh after Fajr. yes, correct. And it was a very free flowing conversation that we had. I'll ask our editor to sort of cut out interesting bits out of it, make it more interesting for someone who has a shorter attention span, you know, हाँ हाँ, and post it on YouTube. correct. So a lot a lot covered here. And I think one lesson that we can take, a few very basic lessons that retail investors can take from this is that investing is a very lucrative and a very rewarding, very lucrative and very rewarding career sector. But to make it big over here, first of all, you have to stick for the long term, and you really have to hone your investment skills, read more and more and more, uh, and just get better at it. And आपकी जो कंपाउंडिंग जो रिटर्न्स में होती है वो तभी होती है जब आपकी खुद की नॉलेज और स्किल्स में कंपाउंडिंग हो रही होती है, right? So that's very important. And I think I heard Charlie Munger say Correct. this, if I remember correctly, that like कुछ साल पुराना interview है, so he was 90 plus years old, and he said कि I'm a much better investor at 90 than I was at 60. So think about it from that perspective. And we are still in our 20s and 30s and 40s, so we still have a long way to go in terms of learning. I think उसमें दो तीन चीजें हो जाती है. What Charlie Munger said was, once you look into how he also. So first thing, how does Charlie Munger? How did he used to invest? So uh, Charlie Munger अपने बहुत सारे इसमें ना annual report, the annual shareholder meeting, not of the Berkshire Hathaway, but of the other business where he was the chairman. ठीक है? Right. Okay. He used he did not used to do as much disclosure. For many things he would just say कि हाँ ठीक है, we'll take those discussion, we'll decide उसमें क्या करना है. So shareholders need not know the strategy. And sometimes he would also go to the extent of saying कि हाँ ठीक है, cash है, that's okay, but we will make an investment. So I think in one instance he sat through on cash for some 6 7 years, and then in one scoop, वो 2008 वगैरह के टाइम में he ended up making all the investments. So right from 2002 to 2008, he did not make any investment. In 2001 to 2008, he did not make any investment, and then in a span of few months, he ended up deploying everything.
Interesting. So one has Interesting. to so when you look at all of these things to his statement and tie up to his statement, you see कि चार्ली मंगल would also say कि अच्छा ठीक है मतलब I am a much better जी जी. investor, but at the same time मतलब much better investor in the sense कि patience has come in, perspective has changed, there's a lot of knowledge addition that has happened. Yeah. ठीक है. So all of these things come at the same time. Right, right, right. Absolutely. I had to connect my laptop to the charger. अच्छा चलो I think we took a lot Okay, of then, time. inshallah, Shoaib bhai, let's connect soon on some other personality next time. Maybe Charlie Munger itself, or Benjamin Graham, or maybe someone more Sure, recent. Peter Lynch, maybe. Uh, you know. done. And thank you so much for taking out the time, especially Ramzan mein, Roze mein, so early in the morning. Thank you. Thank you so much for having me. Okay, thank you so much, Shoaib bhai.